Hello, welcome to the lecture of engineering mechanics for ATO main examination. In the last video, we have discussed about the fundamental of engineering mechanics. In this video, we'll talk about the equilibrium and trusses. Okay. Our focus will be on equilibrium and truss on this video. So let's start. Here is the outline I'll cover in this video. First, we'll discuss equilibrium. What is equilibrium? Condition for equilibrium. What are the equilibrium conditions for different situations? Two force member under two force. How a body will be in equilibrium under three force. How an object will be in equilibrium. Then free body diagram. Then total system free body diagram. Then we'll discuss about supports. And then we'll go for the concept of truss. What is a truss? What are the types of truss? What are the methods for solving? These are two method of joint, method of section, then special case for the truss. And then we'll talk about support reaction calculation, and we'll do a lot of numerical in this chapter. So let's go to the next slide. So what is equilibrium? From starting the chapter equilibrium, we should know what it does it mean. So equilibrium basically means that the net force on the object is zero. That means it's saying if you have an object, the net force acting in that object is zero with any direction. The resultant force acting on an object is zero. See, in the last video, we have discussed that force is the physical quantity which will make an object into motion. That means force is the cause which will make translation, pure translation or pure rotation or a combination of translation and rotation. Here we are saying the net force will be zero. That means the body will not move at all. So we are talking about an object which will be in rest. So for that condition, the net force on that object must be zero. So let's see. See, I will take two situations to do this to make you understand. So I'm drawing an 2D coordinate system first. Then we'll draw an 3D coordinate system. Okay. These are the three system. Okay. Now I'm taking an object. Here is the object, 2D object. Now here is the two situation. Is the two-dimensional situation. Here is the three-dimensional situation. For equilibrium, the body must be at rest. For that, if you will take this one is x-axis and y-axis. In the 2D case, there is nothing in 2D, but from our viewing angle and simplicity of the calculation, we are taking an 3D object as 2D. Okay. So in the 2D point of view, if I want this object not to move, so the net force in x direction must be zero on this object, and net force on y direction must be zero in this object. If net force in x direction is equal to zero, it implying what? It implying that no motion in x direction, and if net force in y direction is equal to 0, that implies that no motion will be in y direction. So we can say in a 2D for an object, if net force in x direction is equal to 0 and net force in y direction is equal to 0, in that case the object is at equilibrium. Are you getting my point? So the equilibrium means the body must be at rest. Okay, if you take a 3D, this xyz Cartesian coordinate system, the force in x direction, net force in y direction, net force in z direction. Okay, net force in x direction, net force in y direction, net force in z direction. What are these net force I'm talking about? If there are many number of force acting on that object, in the last video I have shown you, we can, whenever we have an coplanar force system, basically we are not going to deal with this 3D. We will be dealing with 2D only. So in a coplanar system, I have said in the last video, if there are many number of forces are there,
what we need to do is that we need to resolve all the force in vertical and horizontal component, so that we can calculate the net force in x direction is equal to 0, net force in y direction is equal to 0. If both the component are 0, then the net force will also be 0, because we know the force vector is nothing but a force in x direction I cap plus net force in y direction j cap. What is Fx? Fx is the magnitude of force in x direction. What I cap is indicating? I cap is indicating the force, the direction of the force. The magnitude of the force in y direction is indicated by Fy. So here, if both the component is 0, then only the net force will be 0. Are you getting my point? Whenever you will be having a vector, like example, take an example, velocity vector is equal to the velocity in x direction I cap plus velocity in y direction j cap. If you want the net velocity to be 0, the condition is that both the magnitude in x direction as well as y direction, these two magnitude must be 0, then only the net vector will be having 0 magnitude. So this is the concept behind equilibrium. So next we'll go towards the condition for equilibrium. See, if it is a 2D, whatever I have discussed I will write here. One more thing I left to discuss here, I was talking about only force, net force, net force. See, force is making in any direction, net force is trying to body make a translation, but we know force can make three things. It can make translation, then it can make rotation as well as combination. Okay, so here I have only discussed the force. If you again consider this 2D also, this object, getting my point, this object, okay, this object can rotate about this x-axis, so this object can rotate about this axis, also this object can rotate about this axis. So these are the, sorry, let's see, I was saying this object cannot move about this axis in a 2D, and this object cannot rotate about this axis, because in a 2D it can only translate in x-axis, y-axis, and otherwise it can only rotate in this sense, okay, in a clockwise sense or anti-clockwise sense. These are the three motion possible in 2D case. In 3D, all these 6 cases are possible. It can translate in x, it can translate in y, okay, it can translate in x, it can translate in y, translate in z, it can rotate about x, it can rotate about y, it can rotate about z. But here in 2D it can only, if it is an xy plane, then it can translate about x, it can translate about y, and it can rotate about the z axis, because z axis will pass through this point and perpendicular to both these axes. Okay, so the condition, all this condition I will write in the next slide. So what do we see in 2D, sorry, in 2D, what is the condition for equilibrium? Net force in x direction is equal to 0, net force in y direction is equal to 0, and net moment in z direction is equal to 0. Net force in x direction is equal to 0 means there will be no translation in x direction. Net force in y direction is equal to 0 means there will be no translation in y direction. Net moment about z axis is equal to 0 means there will be no rotation about z axis. This is the 2D. I am taking the plane xy plane, okay, xy plane accordingly. Then in case of 3D, we have seen just recently the net force in x must be equal to 0, net force in y must be equal to 0, net force in z direction is equal to 0, and net moment about x-axis must be 0, net moment about y-axis must be 0, net moment about z-axis must be equal to 0. In a 3D object, the net force in x direction is equal to 0, net force in y direction is equal to 0, net force in z direction is equal to, net force in z direction is equal to 0. All three is equal to 0. That means all the component of a force is 0. That means we can write in vectorial form
that the force vector is equal to 0, the net force vector is equal to 0, and we can write the net moment vector is equal to 0, because the force vector is nothing but the component sum of the component fxi cap fij cap plus fz k cap. Similarly, the mnet vector we can write. So this is the condition for equilibrium for 3D and 2D. These is the three condition will be required in a few minutes, because our question will be based on 2D only. So net force in x direction must be equal to 0, net force in y direction must be equal to 0, and net moment about z axis is equal to 0. Then we will be saying that the body or the object is at rest. Getting my point? Now we'll proceed to the some of the different case. See, if there are some particle, this is a particle. If you have a single particle, then the equilibrium condition is that in 3D, that is the general case, the net force vector is equal to 0 and net moment vector is equal to 0. This is the condition for equilibrium. We have component for 2D. Out of the 6 equation, we got only 3 in 2D. We got only 3 equilibrium equation. In 3D, we got 6 equilibrium equation. So for a particle, see, it is a point, so it cannot have any moment about that point. So only condition is required is net force is equal to 0. That is the condition for a particle. If you take a system of particle, there are number of particles in this system. In that case, what is the condition? The net force must be equal to 0 and net moment must be equal to 0. This is the sufficient condition as well as necessary condition. Here also, this is the necessary condition. What will be the sufficient condition? Sufficient condition means the total system of particle is satisfying the equilibrium condition, okay, but all the subsystem will take number of subsystem. The subsystem must also satisfy this. If the subsystem satisfy, then we'll say it is sufficient condition. Okay, yes. If it is net force is equal to 0, net moment is equal to 0, it's necessary condition. A sufficient condition means the subsystem must satisfy the equilibrium condition as well. So for a rigid body, we have taken 2D, 3D. Okay, so in a rigid body, we have in the initial starting of the video, we have seen the net force must be 0, net moment must be 0. This is the necessary condition as well as sufficient condition. For an interconnected rigid body, if there is a number of like a big structure or any rigid body, connected rigid body you have, so the net force must be equal to 0. That will be, and the net moment is equal to 0. These are the necessary condition for equilibrium. And if every subsystem satisfy this equilibrium equation, in that case we'll say this will be the sufficient condition. So subsystem must satisfy the equilibrium condition. Okay, this is the condition generally for equilibrium of any object. We have seen for particles, for a system of particle, for rigid body and interconnected rigid body. That means the system of rigid body, the number of rigid body connected. Okay, in any case, you can assume any equipment which contain a number of components. So the next is that two force member. How a object will be in equilibrium. Suppose, see, we'll take an object. We'll be dealing with 2D only. So this is object. Another object, if we'll take, this is an object. Okay, we'll take an sphere as well. This is the object. So see, in all these cases, what is I'm saying, if you have only two force, you have only two force, you don't have any much more force. So
Suppose one force is acting at this point. So for the equilibrium of this object, the other force, this one is the first force, I am writing F1. The other force must be acts in opposite direction for equilibrium, because if F1 only F1 will act, what will happen? The body will try to translate in this sense. Okay, the body will translate in this direction, but we don't want any motion. So to balance this motion, the opposite, in opposite direction to this, the line of action of these two body must be same. That means they must be collinear to each other and equal in magnitude and opposite in direction. That means I'm saying F1 must be equal to F2, and the direction of F1 and F2 must be in different direction, in alternate direction. So for two member, the condition is that I'm saying for two, whenever you have two force and the body is in equilibrium, in that case the both force must be equal. That is the first condition, so that the magnitude will be balanced, as well as direction must be cancelled out. So the both the force must be equal in magnitude and opposite in direction, and they are collinear to each other. This is the condition for any object to be in equilibrium under the action of two force. Okay, under the action of two force. So here is an object. Let's see, I'm drawing any force in a random direction. Suppose this is the force. So if this is a force, the other force must be along this. So I'm saying the line of action must be same, so that they must be collinear. If it is F1, the other one will be F2, and F1 will be equal to F2. This is the condition. The magnitude must be same, the direction must be opposite, and they are collinear to each other. If here you'll apply a force in this direction, the other one must be collinear to this. Okay, so if it is F, other one is also F. So same magnitude, opposite direction, collinear to each other, then only the object will be in equilibrium. So next we'll go to the three force member concept. This is quite important as per as exam. Okay, what it is saying? We are saying uh, we have an object and we have three force acting on that object. So suppose I'll take an object. Don't worry. This is the object. So I'm saying we have only three force. Okay, three forces are acting on this, and for the condition of equilibrium, how the force must they act? Suppose I'm drawing randomly. Just see, here is a force. We'll draw some force vector. Okay. This is the force, another force in this direction. Will these all these three force, will these three force make a body? What will these three force will make the object in equilibrium? Will the object in rest? No, because see, the line of action are different. It is trying to move the object in this sense, this one is trying to take the object in this sense, this one is trying to take the object in this sense. So all the force, the all the three force have different direction. So direction, not just direction, they are not meeting at a point. That is the condition. So for a condition of equilibrium under three forces, I will say so we'll take the first two. I'm writing the condition. Okay,
For three force, they must be coplanar. The first thing is the three force must be coplanar, and other is they must be coplanar होइतवा दरकार, तापर concurrent भी हेतिवा दरकार. They must be concurrent as well. And the most important thing, they must form what they will form, they will be formed, or I can say in this way, so they must form a polygon, or I will write in this way, just the three force must be coplanar, this is the first condition. They must be concurrent, this is the second condition. And the polygon formed by these force, them must be a closed triangle. Getting my point? So he's saying the first thing is that coplanar. Okay, it's coplanar होगा दरकार. Then तीनटा जाको गोटे पॉइंट रे मिसिवा दरकार. कोप्लानर नहेले जदि ट्राइपॉड एग्जांपल लास्ट एग्जांपल भलिया नेथिले सेमिति केस रे तीनटा फोर्स जदि एक्ट करूछन गोटे ऑब्जेक्ट रे केबे हे पारे. सी मु जदि कहबी एडी गोटे ऑब्जेक्ट एमदि नेगली 2D रो एडी गोटे फोर्स लागिला एडी गोटे फोर्स लागिला. ठीक अछि, से माने को कोन कनकरेंट अछन गोटे आ गोटे पॉइंट एडू परपेंडिकुलर रे ए पॉइंट रे परपेंडिकुलर जेड अन्य एक्सिस रे अछि. धर एडा एक्स एक्सिस एडा भी नेगेटिव एक्स एक्सिस किंतु एडा ऊपर ढाला वाई एक्सिस किंतु जेड एक्सिस थ्रू एडा पास करू. ता माने एडा याड ट्राई करूची मूव करे याड ट्राई करूची एमाने बैलेंस करि पारंती जदि टू फोर्स मेंबर हो. जदि थर्ड फोर्स अन्य को डायरेक्शन रे हेगला किंतु एडा प्लेन रे नाही ता माने ए ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम रे हेई पारे. So for equilibrium the three force must be coplanar, concurrent, and the polygon formed by them must be a closed polygon. What I am saying, what is the meaning of this statement? So I will take an object to demonstrate this statement, our all-time favorite object. Okay, suppose in this object I am taking any two force. Okay, here is a force, another force in this, suppose in this direction. Okay, see, if these are the two force, these two force are not what, these two force are not collinear to each other, they are not also opposite to each other. Okay, so these two force cannot balance this force. So if I need to apply a third force for making this object equilibrium, the third force must be in this direction only. Why in this direction? See, because the first force, this is the first force F1, this is the second force F2, and this is the third force. The three force must meet at a single point. This is the single point, all the line of action is meeting. Okay, that means they are concurrent, they are all the three forces are in the single plane, so they are coplanar. And the polygon formed by them must be a closed triangle. What does it mean? How these three forces balance each other, you know? See, this is the third force. Suppose you take any random two force. I am taking this is the single force and other two remain. So what will happen? I'll draw a line. Okay, just a second. I'll draw a line along this force. So this is the line. See, we have left only other two force, the F2 and F3. So in F2 and F3, out of these two, if we will resolve these F2 and F3, F1 and F2 in the direction of the third force and perpendicular to the direction of the third force. So this is another line. If you resolve it in the last
video of the fundamental of engineering mechanics, I have taught you how to resolve a force. So if you will take like this, wait a minute. Now if you resolve these F2 and F3, okay, this F2 and F1 and F2, these two forces, if you just resolve these two forces along the direction, in this direction as well as perpendicular direction to that direction, so you will get like this, two forces. The component will be like this. Here will be a component in the other direction. This will be the force, the component of the force F2, and for F1 we will get again another force in this direction also. The other one will be in the downward direction. These are the components you will get. So whatever the forces in these two direction, okay, whatever the force in these two direction, they will cancel by themselves, and the third force and the remaining two component in this direction will balance them. So this is the way how the three forces are making an object, how and three force making an object in equilibrium. So the three force must be coplanar, they must be concurrent to each other. Okay, the formula for solving this type of equation is the most important one. Okay, just wait, I'm writing here. Before that I was saying they must form a closed triangle. Okay, the polygon formed by them must be a closed triangle. What does it mean? See କହୁଛି ये हेले तीनटा vector. Okay, these are the three vectors. If you draw like this, and the other sense is this, okay, one to other, this will be a closed triangle. He's saying, see, the direction of F3 is like this, the direction of F2 is like this, the direction of F1 is like this. Getting my point? If you are not agree with me the F1 direction, so just see, if I'll extend this one, you will get the, so see, this one F3, this is the direction of F2, this is the direction of F1. Getting my point? So this is a closed triangle formed by them. So by using, we have three forces, suppose this is the side F3, F2 and F1. By using, like I have used in the last session, the cosine law, there is a called sine law. Okay, from the sine law, this Lami's theorem is based on this sine law. Okay, so what is Lami's theorem? I'll narrate the Lami's theorem. See, understand this concept. This is very, very important. Three force member. Okay. So we got for the equilibrium condition of three force. So the first one is the coplanar, other one is concurrent. Okay, and they must form a closed triangle so that the sine law can be used. So in this triangle we can use a sine law. So I'm going to the next slide. I will write the importance. The three force must be coplanar and concurrent. Okay, and the triangle must be a closed triangle, the polygon. The triangle is the polygon formed by the three force. So these are the condition for equilibrium of a object under three force. So now here a theorem comes, Lami's theorem. So Lami's theorem simply saying, if you have an object which is under three force and that object is in equilibrium, that means the object is in equilibrium under the action of three force. In that case, the Lami's theorem is saying the ratio of forces and the sign, the ratio of the force and the sign of the angle between other two is same, is constant. So I'm writing, suppose we have three force. See, I'm drawing three force. Here is the force. Suppose this is the force P. Another force I'll draw Q. Other force is R.
whenever an object is under these three forces, under the action of these three forces acting on that object, so the line of action of these three forces meet at a single point, so that they must be concurrent, and these three forces are lying in a single plane, so this is a coplanar force system. So in this case, the Lami's theorem is saying, suppose this is the angle theta 1, this is the angle theta 2, this is the angle theta 3. So in that case, it's saying the force, the ratio of the force and the sine of the angle between other two. P is the force, the sine of the angle of other two. See, this is the force, the ratio of this force and the sine of angle between the other two. Sine of the theta 1 is equal to Q is the force, and this angle between the other two is sine of the angle between other two, is equal to R divided by sine theta 3 is equal to constant. This is the Lami's theorem, most important theorem. 1 mark question can come in this chapter. Okay, this is the very important chapter. We need to remember this formula. So the force, the ratio of force and the sine of angle between other two should be constant. The ratio of all these three forces must be constant. So from these equations, see, if I will take these two, I'll equate by cross multiplication, I can get an equation. If I'll equate these two, I'll get another equation. Else what I can do with this term and this term, this is the first one, otherwise this one will be second one, or I can say this one. Okay, so only two unknown. Here we have three unknown, P, Q, R, three forces we have. They are acting on that object, but we can get only two answer, two solution we can get, out of this equation. Okay, if only one force will be known, one is known, other two can be solved. This is the way. So you should remember the formula. P by sine theta. P is the force and sine theta 1 is the angle between the other two. Suppose the force are PQR, so the P by sine of angle between QR is equal to Q by sine of angle between P and R, that is sine theta 2 is equal to R divided by sine theta 3. I will do a lot of numerical based on this, so don't worry. So this is the Lami's theorem, very important in the equilibrium. So in this half an hour, we have covered almost all the concept related to equilibrium. Now we'll see the free body diagram. Okay, what is free body diagram? I will do some numerical based on this free body diagram, then only this concept will be clear. Because otherwise it will take a lot of time to give example of this free body diagram. So I'm just writing what is important. You should remember this 4 point regarding free body diagram, then easily you can do the numerical and answer all the MCQ type question which will be asked in the examination. So before that, I'm saying what is free body diagram. Okay, what is free body diagram? Free body diagram means isolating. So free body diagram is nothing but isolating an part of the system. So suppose you have like this is any object like this. You have a sphere which is connected by a rod, and this is a rectangular box. So you want to draw the free body diagram of this sphere or the free body diagram of any. Okay, in that case, in a system, if you want free body diagram of any component, okay, what you need to do? You need to isolate it. Isolate means you just remove from the system. So isolating the selected part. Isolating the selected part from the system, you will be got the free body diagram. So the free body diagram will be like this. So in this case, the free body diagram of the sphere is this. But what are the things will be drawn on the free body diagram? That is most important. So what will it contain? Free body diagram will contain
what it will contain. See, it will contain number one, the weight of the object, whatever the weight. The second thing it will get the external load, whatever force or anything is acting on that object, external load. The third thing is the reaction, support reaction. Support reaction, what are the support reaction? We'll discuss. Support reaction are two types, like one is normal, other one is called tangential. That is nothing but the friction along the surface. Okay, tangential. I'll write friction. And the fourth thing, if the body is in motion, see what it is. It is inertia force. Okay. In the dynamics chapter, when I will teach dynamics, in that I will talk about inertia force. In the first equilibrium chapter, we will deal with only three: weight of the object, external load, whatever load is acting on that object. Then we will talk about the support reaction. Okay, support reaction can be a normal reaction or a friction reaction. Okay, so see, these are the four things. Inertia force, I will just give you an idea. So see, we'll take an object. This is the object. Okay, if the body is in accelerating, if body is accelerating, okay, the acceleration is not equal to 0. That means the object is accelerating in this direction. So can we apply the equilibrium condition? No, because the body is in motion. So we cannot apply this. So the body is in motion means the net force is not 0 on this object. So if we want equilibrium condition needs to be satisfied, the net force must be 0. We have in the start of this session, I have told you that the net force must be 0. So if the body accelerating in this direction, that means the force is also in that direction, because in the starting of this engineering mechanics first lecture, I have said net force is equal to mass into acceleration. The force direction and the acceleration direction must be same. See, if the acceleration is in this direction, in that case the force is also in this direction, net force. So if you will apply here is a single force, this is the body is in motion. If you want to apply the equilibrium condition, what you need an opposite force of the same amount. If you apply the opposite force of the same amount, this is also net force, which magnitude will be, I will talk, I'm just saying it's mass into acceleration. Okay, because the net force is mass into acceleration. So if you in an object net force is applied, you want to apply the equilibrium condition into a dynamic body, because if the body is at rest, then all the condition we have seen, the 3 condition in 2D and 6 condition in 3D, we have discussed. So if a body is in dynamic condition, that means it is moving. In that case, if you want to apply the equilibrium condition, so you need to apply an inertia force. So the inertia force magnitude is ma. That we will discuss when we will study about dynamics. Okay, don't worry, these are the 4 things. You just remember, the question will be done with these 4 points. Total system free body diagram. See, out of this system, I have taken this sphere and isolated this system. That means I'm saying here we have a sphere thila, I would rod thila, rectangular box. Mu gongoli se sphere tagu alga kardili, और से sphere upre कौन गली, से sphere upre तारो weight देखेली, whatever weight is acting. If there is any external force, I will show the external force. This is the weight. And if this is in contact with any surface, we will show the normal reaction, friction, all these things will show. So these are the things we need to show in the free body diagram. Okay. So now if I'll take the total system free body diagram, this is the total system now. So if I want to draw the system free body diagram, so total system free body diagram means I have a complex system. This was a simple system, a sphere, a rod, and
if I'll take a much more larger system and I want to take 3 or 4 component combiningly, because in that case what will happen, suppose see these 3 are the a system, ये तीनटा हूँ गोटे पार्ट कहार ना गोटे कम्प्लेक्स सिस्टम, मुझे ये तीनटार पूरा तीनटा को मिसैक जब आर फ्री बॉडी डायग्राम ड्र करा चाहिए केमी कौन करी से कम्प्लेक्स सिस्टम रू काढ़िया पड़ो, आइसोलेट करार अच्छी ना। फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स just isolate that part you want to draw free body diagram. So here also 4 thing you need to contain. The free body diagram will contain 4 things. What they are? The weight. The second one is the what? Second one. See the second one. Second one is the external load. Third thing was the reaction, support reaction. Whenever you will, I was saying na in the initial of the first lecture, the force is a body force, surface force. So whenever any force is acting, there is a physical contact, so the support reaction will be there. Action reaction, support reaction. You apply some force on any object, that will also give you an reaction. So this is the normal reaction. It can be, or it can be a friction, that is the tangential reaction. And the fourth point was inertia force, if the body is in dynamic condition. The most important thing I need to make you understand here is that there must not be any internal force. I'll write in a different color. No internal force, no internal force should be shown, or yes, shown or represented. So suppose I'm taking the same system, this is the part of the complex system, this is a rod and a box. Okay, this is a part of a complex system, this is also a small system. So in that case the weight, we will show weight of all the rod weight, but what we will not show the internal reaction. See here will be the internal reaction, since okay, suppose you just we will take another example, it will be very very useful. Now I'm taking a pulley system. See here is the pulley, it is on the roof, it is mounted on a roof. I'm taking the string, this is the string, here is an object connected to the string, and another is here. Okay, and again we have this. So I'm saying here, see this is a pulley arrangement, so this is the string. You know, one more thing I want to note you, the note is that I'll write here note tension, whether it is rope हेगला नॉन आमर कौन चेन हेगला किछि भी जोटा कि फ्लेक्सिबल जिनस फोर्स ट्रांसमिशन रे यूज करा जाए, से सब जिनस रे टेंशन जो होची, टेंशन रो डायरेक्शन कौन ना, टेंशन इज ऑलवेज shown tension whenever whatever component is under tension. What is tension? See this is the an object, if you just pull it outward, though this will be a tension, that means it is trying to elongate. If the force in other, it is trying to compress that, this is the compression. Okay, this is the compression, the other one is upper one is tension. Okay, so tension is always shown towards other end,
So suppose if I'll draw the tension at this point, if I'll draw the tension, it will be towards the other point like this. If I'll draw the tension here, it will be towards other point. If we'll draw here, it will be down, it will be upwards. Okay, so these are the tension. And in a tension, if the friction is not in the pulley, then tension will be equal everywhere. So in that case, if I want to draw the number 1 block, number 2 block and number 3 out of this system, if I'll draw a free body diagram of this, okay, if I'll draw the free body diagram of 1 and 2 combiningly, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏ system ରୁ 1 ଆଉ 2 ର free body diagram ଯଦି ମୁଁ draw କଲି, suppose this is the block 1 and this is the block 2, here is a rope was connected to it. So in that case ମୁଁ କ'ଣ ଶୋ କରିବି, ୱେଟ୍ ଶୋ କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଲୋଡ଼ କିଛି ଯଦି ଲାଗିଛି ତାକୁ ବି ଶୋ କରିବି, ସପୋର୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛି କିଛି କରିବି, ଇନର୍ସିଆ ଯଦି ଡାଇନାମିକ୍ରେ ଅଛି ଶୋ କରିବି, କିନ୍ତୁ ନୋ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଏ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ଟେନସନ୍ ମୁଁ ଶୋ କରୁଥିଲି ନା, ଏସବୁ ଟେନସନ୍ ମୁଁ ଶୋ କରିବିନି। ଏ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଦର ଏଣ୍ଡ, ମାନେ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ କଲେ ଅନ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ କରୁଛି, ଯଦି ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଡ୍ର କରୁଛି ଟେନସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ ଅଦର ଏଣ୍ଡ, ए टेंशन पूरा ड्र हेनी फ्री बॉडी डायग्राम में, टोटल सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम रे बुझलो। द इंटरनल रिएक्शन शुड नॉट बी ड्रॉन इन ए टोटल सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम। सो एटा हबनी है। नेक्स्ट आम कॉन्सेप्ट को जीवा। द इक्विलिब्रियम इज ओवर ऑलमोस्ट, यू जस्ट नीड टू गट व्हाट इज सपोर्ट। ये देखो मु तीनटा बीम नहीं, ये तीनटा बीम रे केते प्रकार सपोर्ट अच्छी मुझे तुमको कही। फास्ट थिंग मुझे कहबी, कलर चेंज कर दो, गोटे है फास्ट धर मु एग्जांपल दूसरी रोलर। रोलर रोलर मीन्स एमती, यहाँ कहती रोलर सपोर्ट। आ गोटे सपोर्ट अच्छी ताकू कहती हिंज्ड सपोर्ट। हिंज एटा हिंज हो गला पॉइंट, आ गोटे को कहती फिक्स्ड सपोर्ट। देख यहाँ को कहती फिक्स्ड सपोर्ट, यहाँ को कहती हिंज्ड सपोर्ट। आंकर सब अन्य अन्य ना भी अच्छे। ये सब सपोर्ट तीन जो सपोर्ट अच्छी आंकर काम कौन देव, तुम्हें जिते बड़े ये सपोर्ट कौन रेजिस्ट कर। देख सपोर्ट रो काम हूँ किसी जिनस को सपोर्ट करा, माने तुम जदि सी ताऊपर किसी लोड अप्लाई करुच, सी खसी जाऊँगी कि मूव करा चाहूँगी, ताकू से मूव कर रोकवाई आम सपोर्ट यूज करुचे। ठीक अच्छे, ये सपोर्ट सबू कौन कौन सब प्रोवाइड कर। देख आंकर सब रिएक्शन हम सपोर्ट। तुम्हें जदि खाली वर्टिकल लोड अप्लाई करो ना, ये अप्लाइड लोड, इस रोलर सपोर्ट खाली वर्टिकल कंपोनेंट को सपोर्ट कर रिएक्शन खाली वर्टिकल डायरेक्शन में कर। तुम जदि ये गोटे हॉराइजॉन्टल लगेदेल ना, मुझे सपोज यही गोटे फोर्स लगेदेली, ताहले यहाँ कौन कर बॉडीटा ये डायरेक्शन में मूव कर, एमती एमती मूव कर। किंतु जदि वर्टिकल रे करुची ताहले ये ताकू किछि ना सपोर्ट करि पारे। सो किछि रिएक्शन दबो। तमे गोटे कांथ को चापड़ा मारल, कांथ तुम जो फोर्सटा को रोकुची, तामाने सी गोटे रिएक्शन पकईकरी तुम जी फोर्स अप्लाई कल, सी सियाड़ गोटे इक्वल अपोजिट फोर्स दूची, से कांथ किसी भांगुनी। किंतु रोलर रो जदि हॉराइजॉन्टल रे दे दबो ताहले एटा को सपोर्ट करबे। किंतु हिंज सपोर्ट कौन करुची, हिंज सपोर्ट दूची रिएक्शन हॉराइजॉन्टल रे तुम अप्लाई कर फोर्स कि वर्टिकल रे कर, ताकू सी ताकू रेजिस्ट करियो। आर हॉराइजॉन्टल हो गला, आर वर्टिकल हो गला, रिएक्शन दी दिगरे दबो। किंतु जदि तुम मूवमेंट अप्लाई करुछ ना, कोई भी डायरेक्शन रे मूवमेंट, ए ब्लॉकटा आराम रे बुली पारियो ए पॉइंट एबाउट रे। जो फिक्स्ड सपोर्ट तीन प्रकार दबो रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन भी दबो, रेजिस्टेंस रिएक्शन माने रेजिस्टेंस तो कौन, हॉराइजॉन्टल रे भी दबो, आर हॉराइजॉन्टल। जदि तुम अप्लाई करुच मूवमेंट एमती, मूवमेंट अप्लाई कल, से रिएक्शन मूवमेंट भी दबो एमती तार अपोजिट। एटा कौन एंटी क्लॉकवाइज, सो सी गोटे रिएक्शन दबो काउंटर क्लॉकवाइज, ए मूवमेंट को बैलेंस करिया सेटा हबो मूवमेंट रिएक्शन। ठीक अच्छे। फिक्स्ड सपोर्ट तीन प्रकार रिएक्शन दबो, तीन टा रिएक्शन दबो। हिंज सपोर्ट दबो दीटा रिएक्शन,
गोटे है हॉराइजेंटल गोटे है वर्टिकल ये हम गोटे रिएक्शन नब रोलर सपोर्ट ठीक अच्छे तुम जब हॉराइजेंटल फोर्स लगेल रोलर सपोर्ट रे सी बालांस कर हिंज कौन कर कि मोस रोटेशन को रेजिस्ट करनी सी खाली ट्रांसलेशन को कर एक्स डायरेक्शन रे बुली पारे कि वाई डायरेक्शन रे बुली पारे जदि कौटी हिंज अच्छी फिक्स्ड सपोर्ट कौन सी टोटाल बुलेनि आर एग्जांपल कौन तुम जो छातर देखियो आमर जो झरका अच्छे विंडो उपरे गोटे कैंटिलीवर बीमटे बाहर कैंटिलीवर एटा कहते कैंटिलीवर माने गोटे एंड फिक्स्ड थी अदर एंड फ्री थी कैंटिलीवर एटा एग्जांपल कौन कहते कैंटिलीवर माने गोटे फिक्स्ड अदर एंड फ्री ताको कहते कैंटिलीवर बीम ए हिंज बोले दीटा सपोर्ट करुच्ची अदर को छाड़ दूची कौन रोटेट करा ए रोलर सपोर्ट खाली वर्टिकल कंपोनेंट को रेजिस्ट कर एतिक जिनस मन रखार अच्छी रोलर दब गोटे रिएक्शन गोटे रेजिस्ट कर गोटे डायरेक्शन फोर्स को ये दब दी प्रकार रिएक्शन ये दब तीन प्रकार रिएक्शन एतिक जिनस एंकर सब अलग अलग ना कौन अच्छे रोलर को आम कहीपर स्मूथ सरफेस इन कंटाक्ट जितेबाला दीटा स्मूथ सरफेस देख ये गोटे सरफेस अच्छी ता तले आउ गोटे सरफेस अच्छी जदि दीटा स्मूथ अच्छा तुम जब हॉराइजेंटल फोर्स पकेब सी रेजिस्ट करें भितर मोशन हो किंतु जदि वर्टिकल तुम फोर्स पकाच सी निज निजे बालांस करदे बुझ ना स्मूथ सरफेस इन कंटाक्ट सो स्मूथ सरफेस इन MCQ क्वेश्चन आसपार जदि इफ टू स्मूथ सरफेस आर इन कंटाक्ट how many number of reaction you will get so smooth surface means it's like it will be like a roller support so it will give one reaction that is only vertical okay if it is a one reaction and that reaction is perpendicular to the contact surface see this is the contact surface and that reaction whatever reaction you are giving by the roller it is perpendicular to the contact reaction here is it will give a horizontal vertical okay ये दीटा डायरेक्शन रो ट्रांसलेशन को रिस्ट्रेन करुच्ची ताने रोकी दूची दीटा डायरेक्शन रो ट्रांसलेशन ये खाली मूवमेंट को अलाउ करुच्ची मूवमेंट को रोटेशन को अलाउ करुच्ची ये कौन करुच्ची तीनटा जाक माने आमर जो इक्विलिब्रियम रे कौन तीनटा कंडीशन अच्छे ये तीनटा जाक कंडीशन सैटिस्फाई कर दूची एंड ट्रांसलेशन को भी जीरो कर दूची मूवमेंट को भी जीरो कर दूची ता संगे ट्रांसलेशन इन एक्स को जीरो कर दूची ट्रांसलेशन वाई की जीरो कर दूची ट्रांसलेशन रोटेशन अबाउट जेड भी जीरो कर दूची बुझल तो एटा थिला सपोर्ट रिएक्शन आ ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आसो ट्रस रे आर बहुत यूज अछि माने कोटा केते रिएक्शन दोछि हमर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रे फिक्स्ड बेसी यूज नै यूटिलाइजेशन नै स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रे अछि व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ द ATO सिलेबस ओनली यू जस्ट रिमेंबर फिक्स्ड सपोर्ट विल गिव 3 रिएक्शन आर अन्य गोटे एग्जांपल हे परयो देखो एडी गोटे अछि बीम रे मु लगैछि हिंज करिछि हिंज माने रोटेशन दबा कथा किंतु दीटा पिन दे दिस दीटा पिन पाखापाखि दे दो माने से रोटेशन करे ए दीटा पिन माने दीटा पिन पाखापाखि जिते थबो एटा बिहेव करियो फिक्स सपोर्ट भलिया कोन कहि परिबी टू पिन जॉइंट क्लोजली ओके टू पिन्स whenever two pin joint closely in that case that will behave as a fixed support au एटा कोन ना रफ सरफेस दीटा जदी रफ सरफेस कांटेक्ट रहउची टू रफ सरफेस इन कांटेक्ट देखो कोन कहउची ये गोटे सरफेस हैला ये गोटे सरफेस धर ये गोटे सरफेस अछि ये गोटे सरफेस अछि तांको भीतर लॉक हे जिवो ताने तुम यदि एक्स डायरेक्शन में फोर्स पक ताकू भी माने तार भी किसी रेजिस्टेंस मिले यदि वाई डायरेक्शन में करो एमती जमी स्मूथ रे मिलता एथरे भी मिले ठीक अच्छे ये दी प्रकार रिएक्शन नौ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सो दिस इज द ऑल अबाउट सपोर्ट्स नेक्स्ट वी विल स्टार्ट ट्रस ओके सो बिफोर स्टार्टिंग वी शुड नो व्हाट इज ए ट्रस what is the purpose of truss and what it is see this is a structure can you see this is a railway bridge okay why it is used to for it works as a bridge okay truss bridge it's called truss bridge and here you can see it is a tower which is used for the transmission of electrical wire okay these are the structure which are called truss what is the purpose of this truss the main important purpose है load carrying okay load carrying
ट्रेन जाऊँगी ए ट्रस ब्रिज रे लोड क्यारी करुँची एथिरे भी वायर जाऊँगी तार किसी टेंशन अच्छी सी भी लोड क्यारी करुँची मेन जिनस लोड क्यारी आम यूज करुँचे ट्रस और ये गोटे ट्रस माने स्ट्रक्चर गोटे पार्ट देख स्ट्रक्चर अच्छी एगुरा सब स्ट्रक्चर एगुरा ट्रस ना एरा सब गोटे गोटे स्ट्रक्चर मुझे एग्जांपल देती देख स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बहुत सारा अच्छे स्ट्रक्चर गोटे हम ट्रस आ गोटे हम फ्रेम दी टाइप वी कैन क्लासीफाई स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बोले आमर जो सिविल स्ट्रक्चर भी रोचे बिल्डिंग अपार्टमेंट है से सब स्ट्रक्चर रे जाऊँगी एगुरा भी सब गोटे गोटे स्ट्रक्चर एम आमर यहाँ मेकानिकल स्ट्रक्चर सब ये ट्रस कौन ट्रस रे खाली एक्सियल लोड लगुच एक्सियल लोड ओनली ओके ये खाली एक्सियल लोड लगुच कौन ना एक्सियल लोड किंतु फ्रेम रे एक्सियल लगे बेंडिंग लगे सब लगे एक्सियल लोड होगा बेंडिंग होगा ट्विस्टिंग होगा जिते प्रकार लोड अच्छी सब लगे आम सिलेबस रे एतिक अच्छी ट्रस ट्रस रे कौन ना जो भी मेंबर नब ता उपरे खाली एक्सियल लोड मिलची माने खाली टेंशन हो पारे ये गोटे एक्सियल माने दीटा फोर्स टू फोर्स मेंबर मुझे पढ़े नी स्टार्टिंग रे टू फोर्स मेंबर हाउ एन ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्स द टू must be equal in magnitude opposite in direction and they must collinear to each other that is the it can be tension or it can be a compression okay it can be compression as well ये जो लोड कैरी करुच्ची ना ये लोड भी कौन ना स्टैटिक लोड ना कि डायनामिक लोड स्टैटिक लोड कैरी करने आम जो यूज करा स्ट्रक्चर ताको कहते ट्रस ता भितर कौन कंडीशन कौन ना ओनली एक्सियल लोड देखो एरा सब 3D स्ट्रक्चर आमर सिलेबस रे अच्छी 2D रे आम जाने केतेटा इक्विलिब्रियम इक्वेशन अच्छी 3टा इक्विलिब्रियम इक्वेशन आम एबे पढ़ले जस्ट रिसेंटली net force in x direction is equal to 0 net force in y direction is equal to 0 net moment about z axis is equal to 0 देखो ये सब ट्रस ना ये ट्रस रे सब गोटे गोटे मेंबर लगी सब मेंबर ये जिते देखो ना सब गोटे गोटे मेंबर एरे देखो मेंबर मझे भी कनेक्ट हो जाए सब गोटे गोटे फ्रेम रो एग्जांपल ट्रस रो एग्जांपल कौन ना जिते बड़े तांको मझे ये गोटे है मेंबर ये गोटे मेंबर देखा जाउछ ना ये सब मेंबर मझे किसी न लगे दरकार देन ओनली ट्रस हम माने एग्जांपल मु ड्र कर देखो ये गोटे ड्र कले देखो 3टा मेंबर एटा है 1 नंबर मेंबर एटा है 2 नंबर मेंबर 3 नंबर मेंबर माने से 3टा एंड को एंड कनेक्शन होइछन 3टा जगर एंड एमिति नै कि आर मझिरु गोटे आनी एठी गोटे कनेक्शन होइजो एठी गोटे कनेक्शन होइजो सेमिति किछि कनेक्शन होबन बुझलो तो एंड टू एंड कनेक्शन होछि ट्रस रे ता उपरे एटा कोन बे यूज होछि ना लोड कैरिंग कैपेसिटी पे आर पुनी तळे किछि सपोर्ट रहयो एटा गोटे हे जारे फिक्स्ड हे पारे एटा गोटे रोलर हे पारे बुझलो ना देखो आम पाखरे 2D रे कोप्लानर केस रे केतेटा इक्विलिब्रियम इक्वेशन अछि 3टा इक्विलिब्रियम इक्वेशन अछि ता माने हम केतेटा अननोन सॉल्व करिबेरा 3टा अननोन सॉल्व करिबेरा 3टा इक्विलिब्रियम इक्वेशन अछि माने हम 3टा अननोन सॉल्व करिबेरा देखो फिक्स्ड सपोर्ट केतेटा रिएक्शन दोतला फिक्स्ड दोतला 3टा सपोर्ट रिएक्शन हमको तो ट्रस पाई मिनिमम जें देले 2टा सपोर्ट दरकार 2टा एंड रे ता हेले जांगी सपोर्टटा माने क्रिएट हे परयो रोलर केतटा दोथला रोलर दोथला गोटे हिंज दोथला 2टा रिएक्शन देखो ये गोटे सपोर्ट रे स्ट्रक्चर हे परयो आमे फिक्स सपोर्ट एडी यूज करि पारे बुझलो ना आम सिलेबस रे खाली रोलर गोटे हिंज गोटे आर मिक्स गोटे हबो रोलर आ गोटे हबो हिंज सो हमर 2टा रिएक्शन मिलियो एठी गोटे मिलियो हिंज रे वर्टिकल रिएक्शन गोटे मिलियो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन गोटे मिलियो एडी खाली वर्टिकल रिएक्शन मिलियो 3टा अननोन मिलियो ये 3टा अननोन 3टा इक्वेशन हमर अछि कोन नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 नेट मोमेंट इन z डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 3टा इक्वेशन अछि 3टा अननोन हम आराम रे काढी पारे जदि हमर अधिक जदि कोड रे हम फिक्स सपोर्ट यूज कर देले इन दैट केस हम सॉल्यूशन पाई परबानी ठीक अछि सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन करि परबानी सब जगह सो से अनुसार ट्रस को केते टाइप रे डिवाइड करा जे ता पूर्वरु मु तुमको अजम्पशन लिखै दोची ट्रस रे अजम्पशन कौन निया आमर ये सब्जेक्ट पढ़े
फास्ट अजम्पशन कौन वेट जो मेम्बर गुरार वेट ना वेट आम नेग्लेक्ट करदे कौन पे नेग्लेक्ट करे ना जो मेम्बर जी वेट सी कि बहुत मात्रा रे अधिक लोड क्यारी करुँचे वेट नेग्लेक्ट होगा तापर जिते जो ऑल लोड नुह ऑल लोड जिते प्रकार लोड लगुच ए ट्रस रे ऑल लोड होगा ना ऑल मेम्बर ऑल लोड एंड ऑल मेम्बर कौन से सब गोटे प्लेन रे रोज ऑल लोड एंड ऑल दिस ऑल लोड एंड ऑल मेम्बर आर कोप्लानर एमती लिखा आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। थर्ड थिंग हूँ जॉइंट सब जिते जाक जॉइंट आम यूज करुचे देख मेन एंड टू एंड सब आम कनेक्शन हम ये मझे किसी हेनी जब मझे किसी रहीगला से फ्रेम ठीक अच्छे जॉइंट आमर कौन सब जाक फ्रिक्शनलेस ये तीन टा हमार आजम्पशन ठीक अच्छे। बर्तमान टाइप मुझे देखा तुमको देख गोटे अच्छी डिटर्मिनेंट और आई कैन से परफेक्ट लिखिदेवा डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ना परफेक्ट ना स्टेबल ये तीन टा जाक गोटे अनस्टेबल डेफिशिएंट और इनडिटर्मिनेट ओवरस्टेबल रिडंडेंट ता माने कौन ये सब शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट ठीक अच्छे ऑब्जेक्टिव वाइज देखो आमर अच्छी तीन टा इक्विलिब्रियम इक्वेशन आमर जदि अननोन भी तीन टा है ताहले ठीक अच्छे आम सल्व आराम रे कर अननोन कौन जे लोड तो अप्लाई हो लोड केते लोड अप्लाई हम यहाँ आम जाने ना लोड अप्लाई करिया निजे तो आम अप्लाई करिया किसी एक्सटर्नल वे ट्रेन गला ट्रेन रो वेट केते से गोटे लोड हम तार जाऊँगी केते लोड रो तार जाऊँगी आम जाने किंतु से सपोर्ट रिएक्शन केते दबो स्ट्रक्चर ताको रेजिस्ट केते करियो सेटा कैलकुलेट करियार अछि मेन जिनिस से सब रिएक्शन होला अननोन सो अननोन जदि समान होला इक्विलिब्रियम इक्वेशन संगे ताले स्टेबल हो मुझे कहि स्टेबल ना परफेक्ट ट्रस ना डिटर्मिनेंट ट्रस एमानकर कौन कंडीशन हम ना इक्विलिब्रियम इक्वेशन इक्विलिब्रियम एमती लिखा आमर ट्रस रे डिफॉल्ट कौन डिफॉल्ट है गोटे रोलर सी दब गोटे वर्टिकल प्लस आ गोटे है हिंज ठीक अच्छे आमर ये दब गोटे रिएक्शन ये दब दुईटा रिएक्शन तीन टा अननोन टोटाल मैक्सिमम आमर यहाँ आमर डिफॉल्ट आम जिते क्वेश्चन एमती ही थी गोटे थी रोलर गोटे थी हिंज सो बेसिकली डिटर्मिनेंट ट्रस परफेक्ट ट्रस ना स्टेबल ट्रस क्या कहुए ना जो थे नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन आम पाखे अच्छे तीन टा जदि नंबर ऑफ अननोन सांगे सामान हो जाए इक्विलिब्रियम इक्वेशन आउ अननोन जदि सामान हो जाए ताने आम से ट्रस को कहवा से टाइप रो ट्रस को जे इट्स ए डिटर्मिनेंट ट्रस और वी कैन से परफेक्ट ट्रस और स्टेबल ट्रस अनस्टेबल और डेफिशिएंट ट्रस माने कौन ना जिते बड़े इक्वेशन अधिक हो आम पाखे तीन टा इक्वेशन अच्छे किंतु अननोन दुईटा अच्छे ता माने से केस रे से ट्रसटा ना स्टेबल ना देखो जदि तीन टा आम पाखे इक्वेशन अच्छी 2D केस रे तीन टा इक्वेशन ना जदि मु सपोर्ट दुईटा एंड रे कौन करी दुईटा रोलर सपोर्ट लगेदेवी ताने मो पाखे रिएक्शन हो तीन टारू कम दुईटा हो किंतु तुम जान दुईटा जाक रोलर सपोर्ट लगेदेले से ट्रसटा स्टेबल हेनी कम तुम जो हॉरिजॉन्टल फोर्सटा पकईदेव से ट्रसटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल चल पड़े व्हाई बिकॉज द रोलर सपोर्ट will not resist the horizontal force because the roller support only give reaction to the vertical force. Okay, so this is the unstable or deficient. What केतेले हबो एटा ना जेतेले इक्विलिब्रियम इक्वेशन टा अधिक होई जिवो काडू ना अननोन माने रिएक्शन कमी जिवो इक्वेशन अपेक्षा रिएक्शन कमी जिवो इनडिटरमिनेट कम हो ना इनडिटरमिनेट ओवरस्टेबल और रिडंडेंट ता माने जिते अननोन बहुत गला 4टा 5टा मुझे गोटे फिक्सड लगेदेली गोटे हिंज लगेदेली फिक्स 3टा रिएक्शन दब हिंज 2टा दब 2टा एंड रे 5टा रिएक्शन गला मो पाखे 3टा अच्छे मुझे सल्व भी करें ताने आर सल्यूशन काढ़ी पारे से मुझे कहूँ इनडिटरमिनेट और वी कैन से ओवरस्टेबल देखो 3टा थे नॉर्मल हो 2टा एक्सट्रा फिक्स माने अधिक रेजिस्ट कर बेसी स्टेबल ना बेसी रेजिस्टेंस दूसरी सी है ओवरस्टेबल जी स्टेबल हवा कथा ताठू अधिक स्टेबल ताने तार किसी जी आम लोड दौचे ताठू अधिक कैपेबिलिटी से ट्रस रही ताकू बियर करने सो इट्स ए रिडंडेंट ट्रस एक्सट्रा समथिंग एक्सट्रा इट हैज ओके सो डिटर्मिनेंट परफेक्ट ताप कंडीशन मु लिखी दूची देखो
मु जदि कहबी एम होची नंबर ऑफ मेंबर मु किसी जिनस नौचे लेट एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर जे इज इक्वल टू नंबर ऑफ जॉइंट आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शन देख ये तीन टा मुझे जिनस ना आम जाने जॉइंट माने गोटे पॉइंट रे आमर केतटा इक्विलिब्रियम इक्वेशन अच्छे तीन टा इक्विलिब्रियम इक्वेशन अच्छे सो मु कहली डिटरमिनेंट पे कौन ना अननोन सांगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन समान हवा दरकार अननोन ये कौन जॉइंट जितेटा मेंबर सेतेटा अननोन फोर्स दे पारे इंटरनल फोर्स नहले रिएक्शन मेंबर आ रिएक्शन दीटा मिसिकी देबे कौन देख आमर 2D केस 2D रे नंबर ऑफ इक्वेशन के अच्छे तीन टा अच्छे मुझे धर गोटे मेंबर नेली ए मेंबर रे गोटे इंटरनल फोर्स आसे जो टेंशन कि कंप्रेशन जहाँ भी अच्छी एथे गोटे इंटरनल फोर्स आसे जदि एमिति अच्छी गोटे टेंशन जदि एमिति अच्छी गोटे कंप्रेशन रो इंटरनल फोर्स ए फोर्स लगी मेंबर इंटरनल फोर्स जदि गोटे होची आर एंड केतरा अच्छी दीटा अच्छी गोटे प्रति मेंबर केतरा एंड अच्छी ए मेंबर दीटा ए मेंबर दीटा प्रति मेंबर रे गोटे इंटरनल फोर्स रोची दीटा जॉइंट रोची तामान देखो अननोन अननोन कौन इंटरनल फोर्स केते होबो आमे जानिने रिएक्शन केते होबो जानिने लोड जहाँ अप्लाई करछे आमे जानिछे ठीक अछि लोड आमे जानिछे इंटरनल फोर्स मेंबर रे कौन हो इंटरनल फोर्स आमे जानिने तापर रिएक्शन कौन आमे जानिने ए दिटा हला अननोन ठीक अछि मेंबर नंबर ऑफ मेंबर जेतिकिटा सेतिकिटा इंटरनल फोर्स रिएक्शन आमे जानिछे मैक्सिमम तीनटा ठीक अछि कम हमर डिफॉल्ट होछि गोटे हिंज प्लस रोलर आमर मैक्सिमम रिएक्शन तीन टा से अनुसार मु बर्तमान अननोन को लिखुची नंबर ऑफ मेंबर माने ये गोटे अननोन जितेटा मेंबर सेतेटा अननोन इंटरनल फोर्स सेतिकिटा हो प्लस रिएक्शन तीन टा जदि ये आ संगे समान हो जाउची का संगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्रति मेंबर धर गोटे मेंबर अच्छी केतटा जॉइंट दीटा जॉइंट धर 10टा मेंबर अच्छी 20टा जॉइंट प्रति जॉइंट रे केतटा इक्विलिब्रियम इक्वेशन लागि पारे तीन टा कम भी प्रति पॉइंट रे नेट फोर्स इज इक्वल टू x नेट फोर्स इज इक्वल टू y नेट मोमेंट अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू 0 देखो ये गोटे एडाला मेंबर रे ए पॉइंट रे मु लगे पारि इक्विलिब्रियम कंडीशन एठी भी लगे पारि इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रति मेंबर रे केतटा दीटा जदि मु m टा मेंबर नै जी ताले केतटा जॉइंट हो गोटे दीटा जॉइंट हो ओके 2 टाइम्स जे जदि 10टा अछि 20टा जॉइंट हो सो जेतेटा जॉइंट मते सेतिकिटा इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिलेबो ये जो तीन टा कौन एटा हला नंबर ऑफ रिएक्शन ता माने से कहया कथा जदि मेंबर प्लस रिएक्शन मिसे कि जदि 2j हे जाउची ताले तमर कहया जे एटा स्टेबल बुझला ना इक्वेशन अननोन समान है सो मेन पॉइंट कौन मेन पॉइंट होची m plus 3 is equal to 2j नॉले एमिति लिख पारे m plus r is equal to 2j एपट साइड हला अननोन डाहण पट साइड होजी इक्विलिब्रियम इक्वेशन एठी कोन इक्विलिब्रियम इक्वेशन अधिक होई जो ता माने m plus r टा कमी जो लेस हे जो कहा जांगे 2j संगे एई कंडीशन को हम कोन कहया नॉले एमिति लिख पारे तीनटा हमर डिफॉल्ट m plus 3 is less than 2j नॉले सेपडू नै जो एमिति m इज इक्वल टू 2j माइनस 3 मैथमेटिक्स किसी असुविधा ना ठीक अच्छे ये कंडीशन हेले आम कहले एटा अनस्टेबल और डेफिशिएंट एठी कोन ना m प्लस r अननोन डा बहुत हे जो कहा अपेक्षा ना रिएक्शन अपेक्षा इक्विलिब्रियम इक्वेशन अपेक्षा ठीक अच्छे ना ए कंडीशन सो m प्लस 3 आम लिख पारे m प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2j डाला कंडीशन बुझेगा ना फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रसेस ट्रस टाइप चिन्ह ये सब कंडीशन मेंबर केतटा गण्य जॉइंट गण्य जदि एमसी माने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी ना एथर एटा बेस बेस इंपोर्टेंट हो जाउछ आ मेंबर रे कोन हे पारे मेंबर टेंशन रे रही पारे नले कंप्रेशन रे रही पारे किंतु मु नोट रे तो मु कहितली नोट रे लास्ट स्लाइड रे किसी समय पूर्व कौन ना टेंशन कौन
टेंशन मेंबर रे हो कि स्ट्रिंग रे हो जो थे हो टेंशन इज ऑलवेज शोन टुवर्ड्स अदर एंड ठीक अच्छे यहाँ कौन आम मुझे ड्र कर ट्रस देख मुझे बर्तमान गोटे ट्रस नौ एग्जांपल तापर ट्रस को केन सॉल्व करा माने आमर एम ट्रस रे को रोची ट्रस रे एम रोची आमको सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन सपोर्ट रिएक्शन बोलते गला अननोन या कैलकुलेट करार अच्छी ना इंटरनल फोर्स कैलकुलेशन ये दुईटा जिनस आमको कैलकुलेट करार अच्छे ठीक अच्छे मुझे देख गोटे मोमेंट ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट कौन कहीदे मेथड ऑफ सेक्शन कौन कहीदे प्रथम आउटलाइन शुणी नियो तापर आम न्यूमेरिकल उपरको जीवा अबे आउ किसी कॉन्सेप्ट ना बर्तमान खाली प्रोसीजर मुझे कहीदे मेथड ऑफ जॉइंट कौन देख गोटे जॉइंट रे बहुत सारा मेंबर एमती लगे गोटे ट्रस रे ये गोटे सपोर्ट रहा जदि गोटे जॉइंट रे आम पाखे केतटा इक्विलिब्रियम अच्छी प्रति जॉइंट रे तीन टा अच्छी तामाने जदि तीन टारू अधिक मेंबर अच्छी कि सपोर्ट रिएक्शन आ मेंबर अननोन जदि तीन टारू अधिक अच्छे आम से सल्व करें डायरेक्टली बुझ ना कौन भी आम कनकरेन्ट फोर्स सिस्टम में जानी कौन जदि तीन टा मैक्सिमम तीन टा अच्छी तीन टारू जदि गोटे जना अच्छी कनकरेन्ट रे सेटा लामिन्स थ्योरम पकई काटिदे ठीक अच्छे सेटा अलग जिनस ये किंतु प्रति जॉइंट आम पाखे तीन टा इक्विलिब्रियम इक्वेशन अच्छी जदि तीन रु अधिक अननोन अच्छी धर यहाँ हिंज ये गोटे भी रिएक्शन दब ये भी गोटे रिएक्शन दब ये गोटे मेंबर रे अननोन होगा ये गोटे अननोन होगा ये गोटे अननोन होगा ये गोटे पांचटा अननोन होगा आम यहाँ डायरेक्ट सल्व करें बुझल ना सो ये जो सपोर्ट रिएक्शन आराम से कैलकुलेट होप आम खाली कौन करार अच्छे ना टोटाल सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम गारे देवार अच्छे सिस्टम पूरा तामाने जिते जाक मेंबर अच्छी समस्त की टोटाल एकाले गारे दबा सपोर्ट रिएक्शन को अलग कर देगी जितक जाक सपोर्ट रिएक्शन दे सिस्टम रे सपोर्ट रिएक्शन हटे दबा सपोर्ट हटे दबा सपोर्ट रिएक्शन शो करदबा तामाने टोटाल सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम होगा इंटरनल फोर्स किसी शो करानी वेट तो नेग्लेक्ट कर दे ऑलरेडी एक्सटर्नल लोड जहाँ अच्छी लगेगा ये तो ट्रस वाला स्टैटिक तामाने किसी इनर्शिया फोर्स आसोनी बुझल तो सपोर्ट रिएक्शन फ्रिक्शन भी ये किसी ना कौन भी ये किसी मोशन होनी सो टोटाल सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम रो आराम रे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से तीन टा लगेदबा नेट फोर्स x इक्वल टू 0 नेट फोर्स y इक्वल टू 0 ना मोमेंट अबाउट z इक्वल टू 0 सपोर्ट रिएक्शन इजीली कैलकुलेट कर इंटरनल फोर्स कैलकुलेशन दुईटा मेथड आम यूज कर मेथड ऑफ जॉइंट मेथड ऑफ सेक्शन ठीक अच्छे ये जो इंटरनल फोर्स कैलकुलेशन मेथड ऑफ जॉइंट होगा आ गोटे है मेथड ऑफ सेक्शन एरा कौन मुझे तुमको ना कहि डिटेल किंतु जान लो जे जॉइंट रे जदि बहुत तीन टारू अधिक अननोन अच्छे आम कि सल्व करें आम पाखे तो तीन टा इक्विलिब्रियम इक्वेशन अच्छे सो मेथड ऑफ जॉइंट जिते इन सब जिनस को कमी सब सल्व करवा प्रोसेस मुझे कहीदे शुण मेथड ऑफ जॉइंट यूज करने मेथड ऑफ जॉइंट टू यूज मेथड ऑफ जॉइंट फर्स्ट थिंग इज दैट you should draw the free body diagram of the joint, draw the FBD means just isolate that part you want to draw. Draw the free body diagram of the joint ना कोड स्टार्ट करो जो थे बेसी रु बेसी दीटा मेंबर थो ओके बिकज आउ गोटे जिन मुझे कहती तुम पाखे तीन टा इक्वेशन अच्छे देख तीन टा इक्वेशन नहीं एक्चुअली दुईटा इक्वेशन अच्छे कौन भी कहूँ देख ये गोटे हिंज होगा आमर तो सब दुईटा नहीं जाए ना आम पाखे दुईटा रिएक्शन अच्छे हिंज अच्छी प्लस रोलर अच्छे एमाने कहीं गोटे मोमेंट को रेजिस्ट करना कौन भी ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को रेजिस्ट करो सी करो सो मोमेंट को कहीं रेजिस्ट करना तामाने नेट मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 मोमेंट रिएक्शन आम ये अप्लाई ही करें ना ही बुझल ना कौन भाई हिंज केते जदि फिक्स्ड सपोर्ट होता कैंटिलीवर बीम भाया ये तीन टा मोमेंट रिएक्शन यूज कर बुझल तो ये बर्तमान प्रति जॉइंट आमर दुईटा लखा अच्छे प्रति जॉइंट केतटा इक्विलिब्रियम अच्छे इक्वेशन दुईटा अच्छे मुझे तुमको भूल रे कहीदे गोटे मेंबर रे दुईटा था ये जो कनसेप्टा देख आउ थे कहीदे लास्ट स्लाइड रे कौन था ये जो मुझे लिखिनी 2J
प्रति जॉइंट रे दीटा इक्वेशन अच्छी प्रति जॉइंट रे टूटा इक्विलिब्रियम इक्वेशन अच्छी टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्रति जॉइंट रे बुझल ना प्रत्येक जॉइंट रे आम पाखे दीटा इक्विलिब्रियम इक्वेशन अच्छी ट्रस रे कौन ना नेट फोर्स इज इक्वल टू इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 बुझल ना से जदि एम नंबर ऑफ मेंबर अच्छी आउ तीन आर रिएक्शन तीन रिएक्शन आम तो डिफल्ट नहीं जाइए सो अननोन केतेटा ना रिएक्शन प्लस इंटरनल फोर्स जीटा माने जीटा मेंबर इज इक्वल टू इक्वेशन प्रति जॉइंट रे केतेटा अच्छी दीटा इक्वेशन अच्छी सो टोटल इक्वेशन आम केतेटा अच्छी धर जेटा जॉइंट अच्छी प्रति इक्वेशन रे दीटा तामाने 2j रो इक्वेशन अच्छी सो जेतेले अननोन इक्वेशन संगे समान हेगला इक्वेशन अननोन समान हेगला ताको कहले डिटरमिनेंट स्टेबल जो 2j माने जेटा जदि जॉइंट अच्छी ताहले आम पाखे इक्विलिब्रियम इक्वेशन केतेटा हे जो 2j कौन भाई प्रति जॉइंट आम पाखे दीटा इक्वेशन अच्छी इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करिया बुझीगल ना आउ कि ना ये गोटे मिस्टेक है सॉरी फॉर दैट so to use method of joint first step draw the free body diagram of the joint and draw the free body diagram of the joint our main जिनस हो कौन ना start from two unknown जॉइंट जो जॉइंट रे दीटा अननोन अच्छी से जॉइंट रू स्टार्ट करो से जॉइंट रू सॉल्व करिया स्टार्ट करो से जॉइंट रे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा कौन ना नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 ता माने दीटा इक्वेशन लगेबो तमे आराम रे से दीटा अननोन तमे पाई परिबो ठीक अछि सेठू प्रोसीड करी तुम डिजायर्ड जो जॉइंट रे तुमर आंसर दरकार जो मेंबर जाके जीआर अच्छी सेठू प्रोसीड कर डायरेक्ट तुम से जॉइंट को डेंगी जापर यू कैन नॉट गो टू दैट जॉइंट डायरेक्टली यू हैव टू गो थ्रू द जॉइंट्स वेयर ओनली टू अननोन आर देयर बिकॉज वी हैव ओनली टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन ए पर्टिकुलर जॉइंट स्टार्ट फ्रॉम द टू अननोन जॉइंट जो थे दीटा अननोन अच्छे स्टार्ट फ्रॉम टू द जॉइंट्स एमती लिखिदेवा so we'll write draw the free body diagram of the joint first okay then second thing is that start solving from the joint which have only two unknown okay this is the method of joint nothing else you just need to look where the joint where only two unknown are there you start by taking that joint you choose that joint and apply the equilibrium equation at that joint because see you have to draw the free body diagram of the joint getting my point you have to isolate that joint by showing some of the internal forces on that joint how to do the numerical I will show you because this is the procedure I'm just giving you the outline and the concept outline okay so this is the and the limitation of this method of joint is that limitation कौन आ ना आम डायरेक्टली को जॉइंट को डिजायर्ड मेंबर रो अननोन फोर्स काढ़ी पारे इंटरनल फोर्स डायरेक्टली आम कहार गोटे चाहूचे से जापे आमको स्टार्ट करार अच्छे कौटू ना जो दीटा अननोन अच्छे ठीक अच्छे सो वी कैन नॉट गो directly for a particular member okay we can't directly we can go but we can't go directly okay we can't go directly for the particular member for the particular member am I is this okay yes now we'll go for the next concept how you can solve this truss there is two way any method you can apply you can get the answer but which one according to the situation you have to choose that concept or it will be mentioned in a theoretical like
written examination, else you can just get the answer, that's okay. It's method of section, it's called method of section, the second one. I'm just writing the steps and we will do the numerical because it will take a lot of times to make you give you example. So first thing is that I'm saying cut the system into two part, cut the truss or system, whatever you call, cut the system into two parts. Okay, cut the system into two parts. Then the second step is that, and after cutting, select the less calculation part, getting my point. Second thing is that try to cut maximum to maximum 3 member, maximum 3. You have a given, I mean you will cut, not just physically, you just will, for the solving purpose, imaginary we will cut the truss into two parts, so that in a way it should not cut maximum more than 3, so maximum 3 member. And the third thing is that draw the FBD of the separation, FBD free body diagram of the separation section, okay, the cut section. Then in the free body diagram you have cut, so जिते आम काटी देचे को जिन को से भितर किसी इंटरनल फोर्स भी शो करार अच्छी, आमको कौन शो करार अच्छी, इंटरनल फोर्स, तापर आउ कौन शो करार अच्छी, एक्सटर्नल फोर्स, जहाँ भी लगी से ये से ट्रस रे, तापर किसी लोड लगी से सबू शो करार अच्छे। एतिकी है तापर आम यूटिलाइज करदे इक्विलिब्रियम, से कट पार्ट रे आम डायरेक्टली यूज करदे कौन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। आम पाखे तो दीटा अच्छे आउ नेट फोर्स x इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स y इज इक्वल टू 0, नेट मोमेंट भी अच्छे आम पाखे, नेट मोमेंट अबाउट z इज इक्वल टू 0। कौन पे मेथड ऑफ जॉइंट आम पाखे दीटा था, ये किंतु 3टा दरकार पड़े आम अप्लाई करिपरिबा फॉर टोटल सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम, किंतु नॉर्मली आम 2टा ही अप्लाई करिया, प्रत्येक जॉइंट आम पाखे 2टा अच्छे ना, बुझल तो सिचुएशन अनुसार आम देखिए केमिन सॉल्व करिया। फर्स्ट थिंग मेथड ऑफ जॉइंट रे कौन करिया मन रख, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द जॉइंट व्हेयर मैक्सिमम 2 अननोन गिवन, देन आम तापर नेक्स्ट जॉइंट करिकी आम डिजायर्ड लोकेशन आड़ को प्रोसीड करिया। सेकेंडटा कौन ना कट द सिस्टम इनटू 2 पार्ट रे आम काटिबा जिनि मैक्सिमम 3 रू अधिक जिनि मेंबर कटु न थो हला, तापर ताकू से अलगा करदबा जोटारे लेस कैलकुलेशन अछि से पार्ट को चूज करबा, तापर आम सॉल्व करवा केमिति ना इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करी। सो आमर तापर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लास्ट कॉन्सेप्ट मु कहि दोची स्पेशल केस कहि देला पर आम न्यूमेरिकल को जिया, लॉट ऑफ न्यूमेरिकल विल डू, जहाँ भी 2 घंटा हला मु कॉन्सेप्ट कहि सबूर क्लारिटी आसीओ। सो स्पेशल केस, फास्ट स्पेशल केस कहूँ कौन ना एडा को कहती जीरो फोर्स मेंबर कॉन्सेप्ट होगा, ये जो स्पेशल केस को कहती कौन जीरो फोर्स मेंबर, को मेंबर रे फोर्स इंटरनल फोर्स जीरो रहिबो सेटा कहते जीरो फोर्स मेंबर, ठीक अच्छे। जो फोर्स रे इंटरनल फोर्स जीरो रहिबो ताको कहती फास्ट केस कौन ना, फास्ट केस एंती 2टा जदि तुम पाखे मेंबर अच्छी, ये गोटे मेंबर है आ गोटे कलर चेंज कर दूसरी आ गोटे मेंबर, जदि 2टा मेंबर कोलिनियर अच्छा आ सी गोटे पॉइंट रे मिसुचन, यहाँ गोटे जॉइंट होगा आ गोटे थर्ड कलर आ गोटे थर्ड मेंबर आ गोटे लगी, ये गोटे 3टा मेंबर लगी, जदि 2टा जाक कोलिनियर अच्छा ना माने ये 2टा जाक पैरेलल अच्छा एम लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ है 1 नंबर, यहाँ है 2 नंबर, यहाँ है 3 नंबर, जदि 1 आउ 2 कोलिनियर आउ से जॉइंट रे किसी एक्सटर्नल नो एक्सटर्नल लोड कंडीशन कौन नो एक्सटर्नल लोड से किसी लगे ये सपोर्ट रिएक्शन लगे कि ऊपर वेट किसी लगे किसी भी लगे, टोटाल
तीनटा अच्छा है तीनटा मिसी दीटा कोलिनियर अच्छा ताने ये दुटा तो बालांस करें ना निजक निजे जदि यहीटार तुम भावुच कि वेट रहा तुम जब भावुच ये किसी भी फोर्स रहा इंटरनल फोर्स सपोज देख एटा ए दिगरे रहा ये या दुटा चाहिए टू फोर्स मेंबर ए पॉइंट रे बालांस करदे यहीटार कौन करार अच्छे आमको रिजल्व करार अच्छे केमी ना गोटे डायरेक्शन रिजल्व करा आर भर्टिकाल रे गोटे कंपोनेंट बाहर हॉरिजॉन्टल गोटे बाहर हॉरिजॉन्टल को ठीक अच्छे तीन जन ए दुटा मिसिक कौन करें बर्तमान मुझे ए फोर्सटा को जदि ये किसी वैल्यू अच्छी मुझे रिजल्व करी गोटे कौन भर्टिकल कंपोनेंट गोटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बुझीपार ना जमी फास्ट क्लास रे कही जदि भर्टिकल कंपोनेंट को किए बालांस कर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट धर एटा जो वन अच्छी आउ आर कंपोनेंट मिसिक टू सागर बालांस हो ए डायरेक्शन को एपटे किए बालांस कर कहीं करार ना से ये किसी भैल्यू रही पारे यहाँ गोटे जीरो फोर्स मेंबर आर मैग्निट्यूड जीरो थर्ड फोर्स जदि दीटा मेंबर कोलिनियर अच्छा से किसी एक्सटर्नल लोड लगे से जॉइंट रे देन थर्डटा जीरो हवा को बाउंड सेकेंड जिनस हूँ जदि दीटा मेंबर कनेक्ट होती ठीक अच्छे दीटा मेंबर जदि कनेक्ट होती गोटे जॉइंट रे आड़ी एगेन नो एक्सटर्नल लोड एगेन एठी भी नो एक्सटर्नल लोड एट द जॉइंट से जॉइंट रे जदि किसी एक्सटर्नल जॉइंट ना देख मु बर्तमान कौन करी ये धर मु कहली ये इंटरनल फोर्स अच्छी एथरे भी इंटरनल फोर्स ये इंटरनल फोर्स रो देखो आर कंपोनेंट गोटे बाहर गोटे केमी बाहर मुझे आ गोटे कलर नहीं ड्र करी गोटे कंपोनेंट बाहर ए फोर्स ए फोर्स कथा कौच ए फोर्स गोटे कंपोनेंट बाहर ए दिगरे आर गोटे कंपोनेंट बाहर ए दिगरे ठीक अच्छे तामाने एटा जदि ए डायरेक्शन रे अच्छी सपोज कौन करिया एडार तो सामान डायरेक्शन रही पारे बालांस केमती कर नेगेटिव आंसर बाहर तामाने आम आजम्पशन भूल हो आर डायरेक्शनटा एपटे हो ठीक अच्छे एमती एटा हेनी ठीक अच्छे तथापि मुझे रिजल्व करुँची गोटे हॉरिजॉन्टल बाहर गोटे भर्टिकल बाहर भाई हॉरिजॉन्टल ए आ सांगे रिजल्व हो भर्टिकल को किए रिजल्व कर जदि कहूच एटा जीरो हो ताले एटा भी जीरो हम यही सिचुएशन रे दीटा जाक जीरो हवा को मस्ट कम ये कहीं बालांस करा ना जदि कोलिनियर होंदा भाई दीटा गोटे पॉइंट रे दीटा अपोजिट अच्छा इक्वल एंड जो कही नी टू फोर्स मेंबर एटा से कंडीशन एटा हला टू फोर्स मेंबर जदि दीटा फोर्स मेंबर को तुम इक्विलिब्रियम रे रखियार अछि दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड कोलिनियर टू ईच अदर एठी किंतु गोटे एंगल रे रहछन ता माने एमाने केबे भी इक्विलिब्रियम रे रहि पारे सेति पई अंगर वैल्यू जीरो होबा दरकार जदि ट्रस रो एमाने पार्ट कम एठी किछि एक्सटर्नल लोड लागिनी गोटे जॉइंट रे टोटल दीटा फोर्स अछि केमिति से जॉइंट रहबो इक्विलिब्रियम रे गेटिंग माय पॉइंट for the joint to be in equilibrium these two forces must be in equal in magnitude opposite in direction and they must collinear to each other that's the condition for two force member here is the three force member okay they are concurrent to each other किंतु ए थर्ड फोर्स टा लामिस थ्योरम एडी जदि भी यूज करछो किछि सुविधा हबनी देखो साइन तमे लगे दबो कोन एडी लामिस थ्योरम लगा मु कहली एडा हेला केते 180 डिग्री कौन भी दीटा फोर्स हो कोलिनियर ए एंगलटा है 180 डिग्री एटा धर तीन ए तीन रो फोर्स धर मुझे कहली एटा पी फोर्स एटारे क्यू फोर्स अच्छे एटारे आर फोर्स अच्छे एम सब इंटरनल फोर्स ए मेंबर गुरा वन मेंबर इंटरनल फोर्स है पी टू मेंबर है क्यू थ्री मेंबर है आर आर रो कौन हम भाई आर बाय साइन केते लिखियो तुम साइन 180 डिग्री साइन 180 डिग्री माने जानिछ तो एटा जीरो ऑलरेडी समथिंग बाय जीरो विल बी गेटिंग टू इन्फिनिटी साइन 180 डिग्री साइन 90 डिग्री 1 साइन 180 डिग्री जीरो सो समथिंग बाय जीरो इज इक्वल टू के आमर होतला ता माने आर इज इक्वल टू जीरोटा सेपटे मल्टीप्लाई हेले जीरो हो ठीक अच्छे कम रेसीो गुरा ना नहीं पी बाय साइन थीटा 1 क्यू बाय साइन थीटा 2 आर बाय साइन थीटा 3 लामिस थ्योरम हम नहीं से जो अनुसार यहाँ है दीटा स्पेशल केस जीरो फोर्स मेंबर पे ठीक अच्छे जीरो फोर्स मेंबर केमी चिन्हट कर एक मार्क पे बहुत इंपोर्टेंट ओके रिपीटेडली देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चांस दैट क्वेश्चन इफ आस्क फ्रॉम द ट्रस चैप्टर और इक्विलिब्रियम it will be a zero force member or a support reaction. Okay, this is all about the concept related to which one, the truss. Okay, one more thing,
सपोर्ट रिएक्शन केमी कैलकुलेट हम मुझे कहीदे सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट हम केमी ना टोटल सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम रे सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन केमिति हेबो it will be by using the total system free body diagram. Okay, support reaction calculation. Okay, तो support reaction केमिति हो ना total system free body diagram. ताମାନେ एग्जांपल मु जदि भी गोटे नउची ट्राई करूची गोटे एग्जांपल ड्रा करिया को एडी धरो एडा गोटे कांथडे अछि एडी गोटे हिंज टे अछि एडी भी गोटे मु हिंज नहीं जाऊँ सपोज एमती गोटे अच्छी रडटे तापर एमती गोटे रडटे अच्छी एटा आडी कनेक्ट होटी कनेक्ट होमती गोटे ट्रस्ट अच्छी एटी किसी लोड लगे ठीक अच्छे ये जगार हिंज दब रिएक्शन एटी भी आसो एडी भी आसो ये सब जिनस एमती सब जिन धर यहाँ गोटे ना रोल लोड दे किसी भी है यहाँ रोल लोड देती यहाँ हिंज देती आमर तो तीन टार आमर कौन ट्रस जो सपोर्ट रो इजी वे हूँ कौन ना डिफल्ट कंडीशन आम कौन नहीं गोटे हम रोलर आ गोटे हम हिंज कम आम पाखे मैक्सिमम तीन टा था को प्लानर रे इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये केस रे ये दब खाली आर हॉरिजॉन्टल गोटे कम ए डायरेक्शन रे अच्छी रोलरटा ये दब दीटा ये दब आर वर्टिकल ये दब आर हॉरिजॉन्टल ये सब केस रे ये केन कैलकुलेट होगा धर लोड रो वैल्यू दला पी एटा गिवन अच्छे केते न्यूटन गोटे दे देछि तापी टोटल सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम आमर करार अच्छे टोटल सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम माने टोटल ट्रस को एमती तुम ड्र करदेव आइसोलेट करदेव सपोर्ट रू सपोर्ट को काढ़ीदेव एमती गारेदेव ठीक अच्छे यही सपोर्ट रू ये हटिगला गोटे सपोर्ट यू गोटे सपोर्ट हटिगला ये सब रिएक्शन शो कर यहाँ आर एच ये आर भी ये आर एच तापर ये लोड लगे पी बर्तमान पॉइंट किसी नियो यहाँ ए बी सी तुम्हें यही इक्वेशन रे नेट फोर्स इजुअल टू एक्स इजुअल टू 0 कर एटा गोटे अच्छी हॉरिजॉन्टल एटा गोटे अच्छी तामाने ए दुटा मिसिकी 0 हे तामाने एटा अपोजिट हवा दरकार ए डायरेक्शन गोटे भूल हम जदि एटा एपटू नौच ताले एटा हम अपोजिट डायरेक्शन ठीक अच्छे यहाँ हम अपोजिट डायरेक्शन एमती हम नेट फोर्स इजुअल टू 0 नब नेट फोर्स वाई इजुअल टू 0 नब तामाने यहाँ सामान डायरेक्शन अच्छा यहाँ तलू यहाँ तलू अच्छे यहाँ तो चेंज करें यहाँ हम ऊपर है नेट फोर्स तापर जब बाहरी पड़ा कौन बाहरी पड़ा आर एक्स बाहरी पड़ो आर एच ये सब इक्वेशन जदि आउ कि लास्ट को दरकार अच्छी मूवमेंट अबाउट टू गोटे पॉइंट नहीं जाओ मूवमेंट अबाउट टू बी नहीं जाओ मूवमेंट अबाउट टू कहार भी गोटे पॉइंट नहीं तुम्हें 0 पकईदे आराम रे इक्वेशन सॉल्व हो आमर दीटा तीन टा जाक बाहरी पड़ो आर एच बाहरी पड़ो आर भी बाहरी पड़ो कहार पॉइंट ए पॉइंट बाहरी पड़ो बी पॉइंट भी आर एच बाहरी पड़ो ठीक अच्छे किसी ना बहुत इजी क्वेश्चन आराम रे हम नो नीड टू वरी एट ऑल सी इन द लास्ट हाफ एन आवर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द कॉन्सेप्ट related to equilibrium. A rigid ball of weight 100 Newton is suspended with the help of a string. The ball is pulled at a horizontal force. It got a force lagi. Then if such that the string makes an angle 30 degree, 80 got 30 degree angle create होइछि with the vertical. Then magnitude of force रो magnitude से केते पचार लामिस थ्योरम बगा से बॉल पॉइंट रे एटा हला f एटा जदी 30 ता माने एटा भी 30 डिग्री ठीक अच्छे यहाँ 30 डिग्री यहाँ 100 न्यूटन एफ बाय यहाँ धर टेंशन है टी लामिस थ्योरम पका एफ बाय ए एंगल के 180 रु 30 गले 150 साइन 150 डिग्री इजुकल टू यहाँ हम 100 डिवाइडेड बाय आर एंगल दीटा के 90 9 3 120 साइन 120 डिग्री एफ रो वैल्यू इजी कैलकुलेट कर दियो।